Hello and welcome to this Facebook Live. I'm Akhil Kumar from The Wire, and right now I'm near Shastri Bhavan, where a group of women under the banner of Pinjra Tod have assembled to protest. We are just going to speak to them about why they are here. Right now they are raising slogans of Azadi. Today is International Working Women's Day, and they are here to protest against a very controversial remark made by the Union Minister for Women and Child Development, Menaka Gandhi, where she justified curfew timing in women hostels, saying that women have hormonal outbursts in the evening. So they are here to protest against her statement. So we're just going to speak to some of them now, while I'll continue showing you some visuals. So we have just reached Krishi Bhavan, and these women are marching towards Shastri Bhavan. I'm with Devangana, who is one of the members of Pinjra Tod. So I'll just ask her why she's here. Why have you gathered here today? Well, we have gathered here. We were earlier at the UGC office demanding implementation of the UGC circular on sexual harassment, which says that there should be elected sexual harassment committees in all colleges, and also says that you cannot impose restrictions on women's mobility through curfews and things like that. And we are outside Shastri Bhavan, outside Menaka Gandhi's office, because we want to tell her that the statement that she made the other day, that curfews are Lakshman Rekhas which should be put on women students, is not allowed at all. And this we do not... Ek minute. We have just reached the main gate of Shastri Bhavan, and as you can see, they are trying to enter the Shastri Bhavan, but the policemen are preventing them from entering. Though some of the women from the group have already entered. So we just spoke to Devangana from Pinjra Tod, who says that they were earlier at the UGC in front of the building of the University Grants Commission to demand the implementation of a UGC circular that says there should be sexual harassment committees in all colleges. So the women have just climbed the gates of Shastri Bhavan and are raising slogans. I'll continue to show you visuals from the protest. Some men have also joined this protest, so I'll try to speak to them. I'm joined by another student who will talk about why he's here. Can you introduce yourself first? My name is Dawa Sherpa. I am a student from JNU. As you must have known that Menaka Gandhi recently she had to make a very controversial remark that students, especially female students, they need to be controlled because there will be hormonal outbursts during the college time. So against such kind of very sexist and patriarchal remark, we are protesting right now. Okay, I don't see many men joining this protest. Why do you think that is? I don't know. Maybe the protester who have organized this, maybe they haven't done it the proper campaigning. But I feel that it is not an issue of women. Like where the patriarchy impacts women, it also impacts men. So we believe that the society should be free from gender. Society should be based on a notion of equality and justice. And this kind of statement directly goes against it. That's why we are here. Okay. So personally for you, what does this day, the International Working Women's Day, symbolize? What does it mean to you? It symbolizes... As a man. As a man, and the point is like that if you go back to the history of this International Women's Day, it was basically a working class movement against the control by the factory owner. So we believe that until and unless
all form of oppression, be it based on class, based on gender, based on race, it is eliminated. We cannot have freedom in isolation. We need to have freedom in totality. So we cannot have freedom within capitalism. We cannot have gender emancipation within capitalism. We cannot have gender emancipation within casteism. So we need to fight against all these forms of socially oppressive practices. And I believe as a man, as a privilege, in gender terms I am privileged. As a privilege, I recognize my privilege, and I believe that, firmly believe that we need to fight against this kind of patriarchal notions. Okay, thank you. I'll show you more visuals of the protest. Women are trying to enter the Shastri Bhavan, but they are not being allowed to. So there are police barricading the gates. The women are trying to push open the gate, but the male policemen from the other side are pushing back. Be careful with hands. I'll keep showing you visuals of the protest until we can speak to someone. For those of you who are just joining us, this is Akhil Kumar from The Wire, and today I'm right outside the Shastri Bhavan, where a lot of women and some men are protesting against this controversial remark by Union Minister for Women and Child Development, Maneka Gandhi, who justified curfew timings in women's hostels, saying that at the age of 16, 17, women have hormonal outbursts. So the women here are protesting against that. They are demanding that Maneka Gandhi come outside and speak to them, and they are demanding that they apologize to them personally. इन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसको सुन के हंसी भी आ रही है और गुस्सा आ रहा है कि इन्होंने कहा है कि अर्ली कर्फ्यू से हार्मोनल आउटबर्स्ट होके रोक लेंगी और घटनाएं रोक लेंगी। इन्होंने सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, JNU, AUD में पढ़ने वाली महिलाओं की नहीं, इन्होंने एक कास्टिस्ट रिमार्क दिया है। इन्होंने कहा है कि 2 बिहारी गार्ड के बाहर खड़े होने से सिक्योरिटी नहीं हो जाएगी। अगर इनको ये बात पता है तो इस रिमार्क का इन्होंने जिस तरीके से दिया है, इस पे ये माफी मांगे, अपनी ब्राह्मणवादी सोच की लक्ष्मण रेखा को पार करे और माफी मांगे। महिलाओं की सुरक्षा तब होगी जब महिलाएं सड़कों पे होंगी, तो उनको थाने में बंद करना छोड़ दे। और इस तरह का जो इन्होंने कास्टिस्ट रिमार्क एक पर्टिकुलर रीजन के लोगों को दिया है, उस पे आके ये माफी मांगे। और इस तरह की मैस्कुलिन पॉलिटिक्स का स्पेस हम नहीं बनने देंगे। इस तरह के बयानों को हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। और आज मेनका गांधी को बाहर आके इस बयान का वैज्ञानिक तर्क और जो भी जाति सूचक और क्लास कास्ट पेट्रियार्की इनकी जो सरकार बात करती है मेक इन इंडिया सेल्फी विद डॉटर एम्पावरमेंट की, उसको जाके ये जो जस्टिफाई करे या तो हमसे माफी मांगे, वरना हम यहाँ से नहीं जाएंगे।
I'm joined by another student who is protesting here. Can you introduce yourself for our viewers? Hi, I'm Subhashini. I'm a student at Delhi University. Okay, so what are the exact demands that you have come here with? Well, we don't really know what would be a productive demand to put before Maneka Gandhi. We've just come here from ITO, where we had a protest demonstration outside the UGC demanding the implementation of the circular that they brought out on the 2nd of May on 2016. We are here primarily to send this message across to Maneka Gandhi that she cannot get away with just saying anything, and especially in the context of International Working Women's Day, the fact that she has raised the question of curfews is only reflective of the fact that she also knows how strong the sentiment is that there are people from BHU, there are people from DU, there are people from Jamia, there are people from Lucknow Law University who are challenging these things, there are people from Bombay University, and we are just here kind of extending this voice, making sure that she knows, that she hears it, because clearly she's not paying enough attention. Okay, thank you. So that was Subhashini, who is also a member of Pinjra Tor. She says that the group is here because they are against remarks made by Union Minister for Women and Child Development, Maneka Gandhi, who justified curfew on women, saying that they have hormonal outbursts after 6, 7 in the evening. So the women here are singing and dancing and raising slogans, demanding that the Union Minister come out and personally apologize to them. As you can see, some of the protesters are also inside, but most of them are outside. I'll try to show you visuals of the placards that they are carrying. As you can see, there are some placards that members of other students' organizations are also carrying. This one says, "We remember Nilofer, Manorama and Tapasi Malik." These were women who were raped but haven't, protesters claim that they haven't yet got justice, so they also remembered them on this day. For those of you who are just tuning in, this is Akhil Kumar from The Wire, and right now I am outside Shastri Bhavan, where a lot of women under the banner of Pinjra Tor have gathered and are protesting against a controversial remark by Union Minister for Women and Child Development, Maneka Gandhi. She recently tried to justify the curfew timing in hostels, saying that women get hormonal outbursts after 6-7 p.m. and there should be a Lakshman Rekha for them. So we have just spoken to some of the protesters who have explained what exactly their demands are, which is mostly that the Union Minister herself come out and apologize to these women. They also say that her remark was also very classist, as she said that 2-3 Bihari guards outside hostels can't protect you.
These women were earlier at the UGC, University Grants Commission, where they were protesting and demanding that the circular brought out by the UGC, which recommends a panel on sexual harassment to be set up in all colleges, be implemented as soon as possible. So as I said earlier, some women were able to enter the Shastri Bhavan while most of them are inside, and they say that they won't leave until they get a hearing with the Union Minister herself. और हम उस लाइब्रेरी में बैठ नहीं सकते तो हम पढ़ाई कैसे करें जब आप लोगों को ज़्यादा मौका मिलता है पढ़ाई का। हम जैसी बहुत सारी ऐसी औरतें हम जाते हैं जो पढ़ाई करने लाख हॉस्टल्स की वजह से और महंगे हॉस्टल्स की वजह से यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाई कैसे करें जब आप उन्हें करने ही नहीं दे रहे हो यार। अगर निकलते हैं रात में यूनिवर्सिटी कैंपस में तो आप हमारे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हो, रेप थ्रेट्स देते हो, ये सब करते हो, तो पढ़ाई कैसे करें हमें यही बता दो। So I am with another Pindra Tod member, Shambhavi Vikram. We'll just speak to her now. Can you introduce yourself and tell us where you study? Hi, I'm Shambhavi. Currently, अभी मैं JNU में MPhil कर रही हूँ. पहले मैं DU में पढ़ती थी. Okay, so you are protesting against Maneka Gandhi's statement, but coming to the larger point of discriminatory hostel rules, can you tell us how it affects students studying in universities? Can you tell us for the viewers? So, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में जितनी यूनिवर्सिटीज़ और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब हॉस्टल जो होता है वो एक बेसिक नीड होता है स्टूडेंट्स के लिए, बट अ लॉट ऑफ साउथ कैंपस कॉलेजेस इन DU डू नॉट हैव हॉस्टल्स, और सारी लड़कियों के जो हॉस्टल होते हैं वो हमेशा लड़कों के हॉस्टल से ज़्यादा महंगे होते हैं। तो हमने जब सर्वे किया था तो लड़कियां ऑन एन एवरेज पे 30,000 मोर देन मेन एवरी ईयर। और एक तो कर्फ्यू तो होता ही है कि आपका 7:30-8 बजे का कर्फ्यू है, क्लास खत्म होगी आपकी 4 बजे, एक थोड़ा सा छोटा सा पीरियड होता है, चाहे आप बाहर कुछ लेक्चर अटेंड करना चाहते हो, सेमिनार करना चाहते हो, यू वांट टू डू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, या आप ट्यूशन पढ़ाकर अपने को सस्टेन करना चाहते हो, वो भी आप नहीं कर सकते, कोचिंग नहीं कर सकते। एंड दिस जनरल प्रेशर जो होता है वार्डन का, मॉरल पुलिसिंग का, और घर पे बार बार आपकी वल्नरेबिलिटी को बार बार वो पोक करते हैं कि तुमने ऐसा किया, आप तुम्हारे घर पे फोन करेंगे। इससे होता क्या है कि जो एक योर एबिलिटी टू टेक डिसीजंस फॉर योरसेल्फ, आपको इन्फेंटलाइज किया जाता है, आपकी ऑटोनॉमी, आपकी मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो मतलब एक तरह से यूनिवर्सिटी औरतों के साथ दोगला व्यवहार करती है, और मतलब दिस इज जस्ट वन ऑफ द मेनी काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट परपेचुएट्स इन द यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर। अभी यूनिवर्सिटीज़ में अक्रॉस द कंट्री मतलब हॉस्टल में एक तो बेकार का जो हमें सेफ्टी का आर्ग्यूमेंट हमेशा दिया जाता है कि आपको सेफ रखने के लिए रख रहे हैं, वेयर एज वी नो दैट अंदर वार्डन ऐसा कुछ हमें सेफ नहीं रखती है। आपका अर्थक्वेक हो, फायर लग जाए, आपका पैर टूट जाए, आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। 7:30 बज गए हैं, अब तुम अंदर ही मरो। एंड वन नोज दैट अगर बाहर सड़कों पर औरतें ज़्यादा आएंगी तभी जाकर सड़कें सेफ होंगी। इफ़ यू हैव पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इफ़ यू आर क्रिएटिंग मैकेनिज्म्स फॉर मेकिंग पब्लिक स्पेस मोर एक्सेसिबल फॉर विमेन जनरली। सो इन सभी मुद्दों को लेकर द फैक्ट कि DU प्रॉक्टर से जब हमने पिछले साल बात की थी तो उन्होंने बताया था कि UGC ने पहले फंड्स दे दिए थे मेंस हॉस्टल के लिए, तो मेंस हॉस्टल चीपर हैं, और लड़कियां बिकॉज यूनिवर्सिटी में बाद में आई हैं तो हॉस्टल बाद में बने हैं, UGC ने फंड देना कम कर दिया है। तो इन इफेक्ट व्हाट इज हैपनिंग इज दैट विमेन आर बीइंग पेनलाइज्ड फॉर कमिंग टू द यूनिवर्सिटी लेटर। दिस इज बेसिकली हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन। सो इन सभी चीज़ों को लेकर पिंजरा तोड़ में हम बातचीत कर रहे हैं, और इसी चीज़ को लेकर 2 साल से हमारा स्ट्रगल चल रहा है। अच्छा, आप लोग अभी UGC के बाहर भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो कैन यू टेल आवर व्यूअर्स व्हाई एग्जैक्टली वर यू एट द UGC एंड व्हाट वर योर डिमांड्स? तो UGC ने 2 मई 2016 को एक सर्कुलर निकाला था विच हैज़ कम आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ स्ट्रगल ऑफ फाइटिंग कि, और सर्कुलर में ये कहा जाता है कि हॉस्टल्स शुड बी मेड फॉर women students on a priority basis, number 1. Number 2, there should be elected sexual harassment complaints committees, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में sexual harassment complaints committees काम नहीं करते। JNU में भी अभी 2 साल से इलेक्शंस नहीं हुए हैं। उसके बाद कहते हैं कि वार्डन्स जो भी एडमिन है उनका एक जेंडर सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, और मॉरल पुलिसिंग नहीं चलेगी, और कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या प्रोटेक्शनिज्म के नाम पर अगर औरतों की मोबिलिटी को कर्व किया जा रहा है तो वो गलत है। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी इस गैजेट को अप्लाई नहीं करती है तो उसको डी-रिकग्नाइज कर दिया जाएगा। ये सर्कुलर आया था 2 मई 2016 को, और किसी भी यूनिवर्सिटी ने नहीं एक्सेप्ट मुंबई यूनिवर्सिटी ने इस
इसको इम्प्लीमेंट करने की इतनी सी भी कोशिश की है। तो हम आज यूजीसी के सामने गए, आज इंटरनेशनल वर्किंग वुमेन्स डे, कि भाई आज तो आकर बात करो हमसे एंड प्लीज टेक सम एक्शन कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हो। पर यूजीसी बाहर नहीं आई हमसे बात करने के लिए, दे रिफ्यूज टू स्पीक टू अस। तो हमने भी उनको मेमोरेंडम नहीं दिया, हमने कहा हम रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजेंगे, उनको बाहर आकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि उन्होंने एक साल में कुछ भी नहीं किया इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए। एंड वी आर गोइंग टू कम बैक एंड वी आर गोइंग टू गिव अ स्ट्रॉन्ग आंसर टू यूजीसी। But why do you think this is happening? You say that there's already a notification by the UGC and policy level interventions are already there, but the problem is in implementation. So why do you think the college administrations are so reluctant in acting on them? Because it clearly serves everyone's interest. So why do you think they are reluctant? See, एक तो I'm now doubtful of the UGC's intentions itself. ऐसा लगता है कि मतलब अब सबको जेंडर पे we are all very progressive, तो एक सर्कुलर निकाल दिया है। बट एडमिनिस्ट्रेशन को तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम रही है। एडमिनिस्ट्रेशन का जो माइंडसेट है, जो पेट्रियार्कल ग्रामेटिकल माइंडसेट है, जो मॉरल एंजाइटी है अराउंड विमेन स्टूडेंट्स, अराउंड द फैक्ट कि विमेन कैन मेक देयर ओन डिसीजंस, कैन मेक देयर ओन चॉइसेस, इससे प्रॉब्लम रही है। तो इट्स नॉट समथिंग दैट्स गोइंग टू गो लाइक दैट। इट्स एक्चुअली शेकिंग वन ऑफ देयर कोर बिलीव्स। So it's no surprise that the administration is always refused to engage with us. Okay, thank you for joining us. So that was Shambhavi Vikram from the Pindra Road collective. We spoke to her about the demands, the specific demands that they put out in their protest at the UGC earlier today, and also we spoke to some other students about why they are here right outside the Shastri Bhavan. For those of you who are just joining us, this is Akhil Kumar from The Wire, and right now I'm outside the Shastri Bhavan, where a lot of women under the banner of Pindra Tod have gathered, assembled to protest against a very controversial remark made by the Union Minister for Women and Child Development. These protesters allege that she is justifying curfew timings in hostels for women, saying that women have hormonal outbursts after 6-7 p.m. and they are demanding that the Union Minister herself come out and address their concerns and personally apologize to them. I'll just show you some visuals of the protest where these women are raising slogans, and then we'll talk to some more of these protesters. बहुत सारे वुमेन पुलिस वाले खड़े हुए हैं और उनको हैप्पी वर्किंग वुमेन्स डे। हमारी जो वुमेन पुलिस वाले हैं उन लोग की रात में ड्यूटी होती है कि नहीं होती है? होती है ना। लेकिन आपके मिनिस्टर ने अंदर बैठ के कहा है कि कर्फ्यू इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हार्मोनल पुलिस वालों को हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया जो कि एक्चुअली रात में ड्यूटी करते हैं। तो डर लगता है, इनसिक्योरिटी होती है समाज की, सभ्यता के ठेकेदारों को कि औरतें अपने बदन पे, अपनी जिंदगी पे, अपने करियर पे, अपनी पॉलिटिक्स पे अपना जोर आजमाएंगी और अपना हक दिखाएंगी। So they are afraid that we are exercising our right to claim public spaces, to dance, to sing at dhabas, to go to discos, to walk at night. तो ये तो मतलब आपको भी हमारा साथ देना चाहिए। इन्होंने आपको भी बोला है एक्चुअली। एग्जैक्टली। कर्फ्यू टाइमिंग से आजादी, मॉरल पॉलिसिंग से आजादी,
For those of you who are just joining us, this is Akhil Kumar from The Wire, and right now I'm outside Shastri Bhavan, where a group of women have assembled and they are protesting against Union Minister for Women and Child Development Maneka Gandhi's statement. They say that she is trying to justify curfew timings in hostels and that it's very regressive and restrictive, and they are demanding that the Union Minister herself come out and apologize to them. We spoke to a lot of protesters here about the demands and also why they were at the UGC earlier in the day. Now I'll just show you some visuals of them singing and protesting. For those of you who are just joining us, this is Akhil Kumar from The Wire, and right now I'm outside Shastri Bhavan, where a group of women have assembled and are protesting against Union Minister for Women and Child Development Maneka Gandhi's recent controversial remark, where they say she's trying to justify a curfew timing in women's hostels. So the women here are singing and dancing and raising slogans and demanding that the Union Minister come out and apologize to them personally. We have spoken to a lot of protesters here. Once I end this live video, you can go back and watch the full video. I'll try to speak to more of them now. So I'm with another protester, Natasha Narwal. So I'll just speak to her about the slogan that she was raising, that Bharat ki Mata nahi banenge, we want Mother India. So why were you raising this slogan? What does it mean? What does it signify? It signifies because this government, the BJP government, the right-wing government and the ABVP, their shoots outfit has been trying to impose this notion of Bharat Mata, of the pure women on women students, and this statement of Maneka Gandhi comes from that notion of a certain kind of women who will be locked up inside their hostels
will not exercise their own sexuality and will confer to this notion of like docile women. And that is why we want to tell this government, tell Maneka Gandhi that we won't mother India. We will not Bharat ki Mata hum nahi banenge, because the concept of Bharat Mata cages women into a certain notion of a docile or obedient woman who cannot exercise her own choice and agency in sexuality. Okay, so the students here, the protesters here have gathered under the banner of Pinjra Tod. So just for the benefit of our viewers, can you explain what is the idea behind this collective and what are the ideals that are pushing for? Okay, so Pinjra Tod as a movement started with this idea of breaking down the barriers, breaking down the cages of the hostel locks by imposing curfew timings on us in the name of safety. Because the argument was, if you're out on the streets at night, you're so unsafe, so for your own safety you have to be locked up inside. But we have been arguing that for our safety, if you're so concerned about safety, make public spaces more accessible to women. And that is why the idea of this collective, that let us collectively claim and reclaim these public spaces and streets, and that is the only way we can ensure our own safety, and not by getting locked up inside and leaving the streets empty at night, where if one woman goes out she feels unsafe. So claiming these spaces, but also claiming these spaces collectively through an idea of a women's collective, and that is how Pinjra Tod is born. But through our journey we have also realized that the cages are not just the curfew timing, the hostels, it is the day-to-day experiences of women students, how they experience the university, the kind of discrimination, the kind of moral policing, the surveillance which is put on us and our bodies every day. And this is a collective to fight against all those things. Okay, thank you for joining us. So that was Natasha Narwal from the Pinjra Tod collective. She just explained a slogan that she was raising, that Bharat ki Mata nahi banenge. We won't mother India. We won't fit into your image of mother India, particular image of mother India. For those of you who are just tuning in, this is Akhil Kumar, and I'm outside right now. I'm outside Shastri Bhavan, where a lot of women under the banner of Pinjra Tod have assembled and are demanding that the Union Minister for Women and Child Development, Maneka Gandhi, come out and apologize to them personally for advocating curfew timings in women's hostels. So I'll just show you some more visuals of the protests and speak to more people. Actually
I'm joined by another protester, and right now many of these protesters are raising slogans against the BJP and RSS and ABVP as well. So why specifically against them? Because it's also a certain kind of a government, like a certain the politics of the BJP and RSS government, which is, I mean, not government, but RSS is also hand in glove with the BJP. So, I mean, there is a certain kind of politics that is being perpetuated here, which tries to, in some way, curtail freedoms of large sections of the society. That whether it's women, whether it is Dalits, whether it is Adivasis, I mean, there is a certain kind of curtailment at play here, and this whole comment which Menaka Gandhi has made on the fact that women should be kept behind curfew bars and warden pressures because they are subjected to hormonal outbursts in the night is basically symptomatic of a larger ideology at play here, which basically thinks that women at some level should. One of the Pinjra Tod members are reading out a letter that they have written. I'll just tune into it. What you have said is not just violative of constitutional rights of all women students to access education equally, but also disrespectful of people coming from particular regions of the country. However, your holding the position of Minister of Women and Child Welfare leaves us with little hope of your ministry and the government representing the interest of the country's women. The least that your public apology will do is give reason to the belief that you are reviewing your opinions. Regards, Pinjra Tod. इतिहास की धारा मोड़ेंगे, इतिहास की धारा मोड़ेंगे, होके रहेगा, होके रहेगा, होके रहेगा, होके रहेगा। साथियों, 2 मिनट लगेगा। कल एक मेनका गांधी के लिए एक ओपन लेटर लिखा था हमने, तो अगर वो पढ़ पाए हम यहाँ और आप लोग सुने। प्रिय मेनका गांधी जी, मीडिया और समाज को दी गई आपकी नसीहत के लिए मन से एक ही आवाज निकलती है, मोहतरमा जरा अखबार खोलिए या गूगल कीजिए। विमेन स्टूडेंट प्रोटेस्ट, आपके ख्यालों पर अनेक भाषाओं में सैकड़ों छात्राओं की विस्तृत टिप्पणी आपको आप ही में मिल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के 2-3 दिन पहले टीवी, अखबारों और फेसबुक पर कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के आंदोलन में महिलाओं के बड़े तबके की भागीदारी थी, तो कहीं मुंबई यूनिवर्सिटी के आंदोलन की मांगे पूरी होने पर छात्राओं के संघर्ष में एकजुटता भरे पोस्ट। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्राओं का चल रहा आंदोलन भी बुलंद खड़ा था। इस महिला दिवस की तैयारी में हम सभी बड़े उत्साह से इंतजार कर रहे थे कि चलो महिलावादी और नारीवादी सोच के तर्क वितर्कों के रेखा में थोड़ा परिवर्तन तो आया। तभी आपके बयानों ने जैसे हमें हमारे बचपन की रामायण की कहानियों में ढकेल दिया, जहां हमें कोई लक्ष्मण रेखा का हवाला देकर बता रहा हो कि इसके मायने समझो, इसके अंदर रहोगे तो तुम कितने सुरक्षित हो। आपके बयान ने एक बार फिर यह याद दिला दिया कि इन आंशिक सफलताओं के बावजूद हम एक जाति और वर्ग विभाजित पितृसत्तात्मक समाज में ही जी रहे हैं, जहां लोगों के सच, सोच, अधिकार और आजादी के पहरेदार सरकार में ही बैठे हैं। आप जिस सरकार की महिला और बाल कल्याण विकास मंत्री हैं, वो महिला सशक्तिकरण के लिए सेल्फी विद डॉटर, मेक इन इंडिया जैसे कैंपेन के जरिए महिलाओं के विकास की बात करती है। आपका बयान इस विकास को बखूबी परिभाषित करता है। मंत्री महोदया, हमारे गुस्से के पीछे हार्मोन्स नहीं बल्कि आपकी भेदभावपूर्ण सोच है, जो आज शहर शहर में छात्राओं को संघर्ष के रास्ते पर उतरने को मजबूर कर रही है। साथ ही लक्ष्मण रेखा खींचकर नस्ल की शुद्धता बरकरार रखने की चिंता को आप शांत कर लें, क्योंकि छात्राओं के आंदोलन के साथ ही दलित छात्र छात्राओं का आंदोलन भी कॉलेज पर जोर पकड़ रहा है और इन आंदोलनों की भी बातचीत है। रही बात सुरक्षा की, तो सड़कें तब सुरक्षित है जब महिलाएं सड़कों पर होती हैं, जब उन पर अंधेरा नहीं स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, ना कि तब जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्राओं को एडमिनिस्ट्रेशन कैद कर ले, बाकियों को पीजी कैद कर ले और फिर जो बंद चंद बचे उनके लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दे आप कि वो उस आजादी को अपना कर भी अपना ना पाए। एक बात तो आपने ठीक कही पर बहुत ही खराब ढंग से कही
कि महिलाओं की सुरक्षा 2 बिहारी सिक्योरिटी गार्डों पे नहीं छोड़ी जा सकती। हाँ, सच है, 2 हो या 20, बिहारी हो, पंजाबी हो, तमिल हो, आपकी दिल्ली के हो, आपके अपने हिंदुस्तान भारत देश के किसी भी राज्य के हो, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी तो वो नहीं कर सकते। महिलाओं को कैद करने से तो ये सुरक्षा नहीं मिलेगी, मगर आपका ये असम्मानजनक कमेंट दर्शाता है कि आप छात्राओं की इज्जत तो नहीं करती हैं, ना ही देश में आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की, ना ही मेहनत करने वाले लोगों की। यूनिवर्सिटी में कार्यरत मजदूर प्रशासन द्वारा एक बार छात्र छात्राओं के खिलाफ खड़े किए जाते हैं, किंतु दरअसल वहां भी हमारी तरह आपके विभेद अधिकारी तंत्र के भुक्तभोगी हैं। हमारी कॉलेज की बढ़ती फीस और उनके घटते वेतन आपकी सरकार के शिक्षा बजट के द्वारा कटौती के ही परिणाम है। अभी तक तो आप 8 मार्च में 1 दिन की छुट्टी देकर, फूल गुलदस्ते देकर और कम से कम 1 दिन का सम्मान देने की बात करते थे, पर शायद आपकी सोच आप ही की बनाई लक्ष्मण रेखा में अटक गई है। याद रखिएगा, जिस यूनिवर्सिटी में महिलाओं के लिए आप ये रूढ़िवादी कानून बना रही हैं, इसकी नींव जाति वर्ग व्यवस्थित पितृसत्तात्मक समाज को दी गई सावित्रीबाई की चुनौती में पड़ी है। शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी ऐसी तगड़ी संघर्ष नींव पर बढ़ रही है, इमारत है, आपकी संकीर्ण सोच के पिंजड़े इसे कैद नहीं कर पाएंगे। आप जो कहिए करिए, हम सारे पिंजरे तोड़ेंगे और इतिहास की धारा को मोड़ेंगे। So that was one of the protesters reading out a letter, a response to Menaka Gandhi on her comment. For those of you who are just joining us, this is Akhil Kumar from The Wire, and right now I'm outside Shastri Bhavan, where a group of women under the banner of Pinjra Tod have assembled and are demanding an apology from the Union Minister for Women and Child Development, Menaka Gandhi. They say that she is advocating curfew timings in women's hostels, and they say that it's very repressive and discriminatory. So we have spoken to a lot of women here. We have spoken to a lot of protesters, some male protesters as well. You can watch the entire live broadcast once I end this live video. So the protesters say that they are not going to leave this place, they are not going to go away until and unless the Union Minister comes out and apologizes to them personally. So I'm just going to stay here for a while and see how this, the ministry responds, how the minister responds, and if she's going to adhere to the protesters' demands. That's all for today. Thank you for logging in. You can watch the entire video once I end this broadcast. Thank you for joining us.